Hello everyone. So welcome to our chapter Mechanical Properties of Solid that is available in class 11 physics. So let's start this chapter Mechanical Properties of Solid. So remember, in this chapter we will discuss some basic things at first. After that, its application can be understood in a very fruitful manner. So first thing, elasticity. What is the meaning of elasticity? So let's डिस्कस स्प्रिंग बॉल मॉडल. स्प्रिंग बॉल मॉडल की मदद से हम लोग इलास्टिसिटी को अच्छे से समझ पाएंगे. देखो, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको, ये पिक्चर पे ईच कॉर्नर पे ऐसे सोचो, इन ईच कॉर्नर atoms are present. That means these are the atoms. Yes, and each atom is connected with its neighboring atom by the means of spring. So let's think R0 is the equilibrium separation between two atoms. So ये मॉडल को हम लोग स्प्रिंग बॉल मॉडल बोल सकते हैं. And R0 is what? R0. R0 is equilibrium separation between two atoms. Between two atoms. And फिगर पे जो दिखाई दे रहा है ना तुमको, so you can say spring now as per the figure, spring is in equilibrium. It means net force acting on any atom is equal to 0. Spring is in equilibrium. बस. So अभी ऐसे सोचो, if R is greater than R0, so ये सपोज ये जो बॉल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ऐसे फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करके, उसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा. बस. सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स इफ ये कंक्लूजन हमको पता चलेगा R इज ग्रेटर देन R0. इफ R इज ग्रेटर देन R0, व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व an attractive force is produced which brings the atom back to its original shape and separation. At the meantime, we can say if R is less than R0, what will happen? So compress करने से क्या होगा, R will be less than R0. So at this moment, repulsive force produced. Repulsive force is produced, which repel atom and brings it back to its original dimension. So when R is greater than R0, attractive force comes to play. When R is less than R0, repulsive force will come to play. Yes. So under this context, we can draw the graph. किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर, सेपरेशन बिटवीन एटम. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन बिटवीन एटम्स. ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा? देखो, दिस विल बी द ग्राफ. So along y axis take potential energy, that is P dot E, potential energy U, and R is the separation between the atoms. So the nature of the graph will be like this. तो जितना सारा पॉइंट दिखाई दे रहा है तुमको, आउट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये जो व्हाइट कलर पॉइंट अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये व्हाइट कलर पॉइंट क्या शो कर रहा है?
it represents the minimum value of potential energy. U is minimum at this point. Yes, and when U is minimum, then the separation is R naught. Yes, so that separation is R naught. So we know equilibrium position पे था जो देखो spring ball model, when spring is in equilibrium position, that means R naught is the separation between two consecutive atoms. Yes, that is the separation R naught. So when potential energy minimum, the separation is R naught. Okay, then all these points देखो जो मैं क्रॉस मार्क करके शो कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर नॉट. सो ये पॉइंट शो कर रहा है आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, एंड ये शो कर रहा है तुम्हारा आर इज लेस देन आर नॉट, ये रीजन. सो व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स. सो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे अट्रैक्टिव फोर्स. यस, एंड यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट्स रिपल्सिव फोर्स बिकॉज आर इज लेस देन आर नॉट. So this is the nature of the graph between potential energy and separation between two atoms. So remember, when potential energy is minimum, then it represents stable equilibrium. That means separation at that moment is R naught. It represents stable equilibrium. Okay, at that moment F will be equal to 0. Yes. So this is about the graph U versus R का graph. Next come to elasticity. Next term is our elasticity. What is that? ये टर्म का खासियत क्या है देखो. It is one of the property of material. So you may write it is defined as the property of material by virtue of which body or material regains its original shape and size. By virtue of which body or material regains its original shape and size कब, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है पता है तुमको, बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स जरूरी है. डिफॉर्म मीन्स टू चेंज इट्स शेप एंड साइज और डायमेंशन. सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इफ ए बॉडी regains its original configuration immediately, that is called, that property is called elasticity, and the body is termed as elastic body. Yes, so इसका एग्जाम्पल देखो, it can be observed in railway tracks. हमको पता है एक्चुअली छोटे क्लास में दो रेलवे ट्रैक के बीच में देखो गैप है, एंड ड्यूरिंग समर एक्सपांड होगा, विंटर में कंट्रैक्ट होगा. यस, सो दैट इज इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है. और हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे ब्रीज पे भी एक्सेट्रा. सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, एंड द बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी. नेक्स्ट कम टू प्लास्टिसिटी. यस, नेक्स्ट टर्म इज आवर प्लास्टिसिटी. What is the meaning of this term? Just opposite to that of elasticity. So property of material by virtue of which body does not regain its original configuration. ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, शेप साइज बोलो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिसिटी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. दैट्स एनफ. सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज देयर, रिमेंबर बॉडी इज नीदर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक.
body is neither perfectly elastic or perfectly plastic. Yes. सो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिलेटेड टू स्प्रिंग बर्न मॉडल से हम लोग शुरू किए थे इलास्टिसिटी. यस. सो इसी मेटल से हम लोग इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला हमको. दैट इज़ रिलेटेड टू स्प्रिंग बॉल मॉडल. सो ये जो पिक्चर देखो, ये पिक्चर से हम लोग के क्या पता चल रहा है. देखो जो मैं एक्सप्लेन किया था ना, उसी की रिलेटेड एक पिक्चर. यस. देखो तो ये क्या शो कर रहा है, दो बॉल के बीच में स्प्रिंग कनेक्ट हुआ है एंड यू इज मिनिमम. यहाँ पे यू का वैल्यू मिनिमम, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड आर नॉट. तो नेट फोर्स क्या है, जीरो. दैट इज योर स्प्रिंग इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम. यस. हो गया ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में. और एक एग्जाम्पल है. देखो एक चीज़ याद रखो, एक मेटल है क्वार्ज. It is not perfectly elastic, but we can say it is very close to elastic material. This is the picture of that substance, that is quartz. तो यहाँ पे ये हो तुम्हारा quartz. So we can say quartz, it is quite close to a perfectly elastic body. Perfect elastic body. Yes. Also another material you can say invar, that is also perfectly elastic. Yes. And clay को हम लोग ये मान सकते हैं quite close to perfectly plastic body. Perfectly plastic body. I hope it is clear to all of you. Yes. Next concept is our elastic fatigue. Next term is elastic fatigue. See, what does it mean? Elastic fatigue means it is the temporary loss of elasticity. So temporary loss of elasticity किसके वजह से, ड्यू टू रिपीटेडली एलोंगेशन एंड कंप्रेशन. इसका एग्जाम्पल तुम लोग अच्छे से समझ पाओगे. इन केस ऑफ एग्जाम्पल यू कैन से ड्यू टू लॉन्ग यूज ऑफ ब्रिज इट डिक्लेयर्स अनसेफ. Due to long use of fridge, it declares unsafe. I hope it is clear. ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली हमारे सामने. रबर बैंड, इसको भी तुम लोग सोच सकते हो. रबर बैंड क्या लिखना चाहिए इसमें. सो रिपीटेडली स्ट्रेचिंग कॉजेस रबर बैंड्स and the elastic clothing lose their original shape and effectiveness. So ये हम लोग लिख सकते हैं repeated stretching ये लिखो ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेचिंग रबर बैंड lose its elasticity, shape and effectiveness. This is the meaning of elastic fatigue. Next term is our stress. It's a common term of this chapter, that is the stress. What is this now? See, so stress is defined as the restoring force acting per unit area of cross section. So it is defined as a restoring force
acting per unit area of cross section. Per unit area of cross section. That means, let us think this is a rigid support. If this is your rigid support, let us consider this is a wire. Wire is attached with the rigid support, fixed rigid support. And ये diagram में कर रहा हूँ, this is the area of cross section is A, and suppose a force F external is acting. External force F is acting on its area of cross section. So restoring force direction क्या होगा? उसका opposite. This is the direction of F restoring. F restoring. So remember in this example, deforming force is equal to restoring force. Deforming force बोल सकते हैं उसको, नहीं तो हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, और दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स. उसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर. रिस्टोरिंग फोर्स. सो इन फार्मूला वी कैन से स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हाउ मच? रिस्टोरिंग फोर्स divided by restoring force divided by area. Yes, so simply we can mention F by A. So sorry, उसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. That is the SI unit. And remember, it is a tensor quantity. Stress is what? Stress is a tensor quantity. Tensor quantity means it gives different values in different direction. So it is a tensor quantity. That is, it gives different values in different directions. I will explain it in detail, so wait up to that moment. So this is the general idea regarding your stress. Yes. So from this picture, now see, from this picture we can say, if this is the area, this area is suppose A, the value of this area, let it be A. So as per the figure, so stress का आंसर क्या होगा? Stress is equals to how much? F restoring divided by area. This is the meaning of stress. Now we will discuss different types of stress. So look at this picture so that you can understand types of stress. Yes. So first is our longitudinal stress. Next one is volumetric stress, और हम लोग इसको बोल सकते हैं बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो तुम. थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस. And longitudinal stress, it is of two types. One is your tensile stress, another one is compressive stress. Longitudinal stress को हम लोग ये भी बोल सकते हैं हमारा नॉर्मल स्ट्रेस. यू कैन से दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस. आई होप इट इज क्लियर. एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे बल्क स्ट्रेस. Yes. So now one by one we have to discuss all these things. So first is our longitudinal stress. Yes. So in this context, let's look at this picture. So ये पिक्चर हम लोग क्या दिखाई दे रहा है? देखो. So what are you observing? Now see. Remember, in case of longitudinal stress, first is our longitudinal stress. Give heading. So remember, when stress is normal to cross-sectional area, then it is called longitudinal stress. Stress is normal to cross-sectional area. So longitudinal stress we can say F perpendicular by A. So longitudinal stress we can say F perpendicular by A. So its varieties are
one is your tensile stress, another one is compressive stress. Yes, so ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है तुमको, सेकेंड पिक्चर, इट रिप्रेजेंट्स टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है देखो, दिस रिप्रेजेंट्स टेंसाइल स्ट्रेस. व्हाट इज दिस? So remember, in case of tensile stress, it is one of the longitudinal stress, and the longitudinal stress produced due to increase in length of a body. So simply you can write, it is the longitudinal stress. It is the longitudinal stress which is produced due to increase in the length. Yes, and in case of compressive stress, what you can write? So थर्ड पिक्चर देखो, थर्ड पिक्चर, सो फोर्स का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है. हाँ, द फोर्स ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी. सो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या लिखना चाहिए हमको? इन केस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस यू कैन से it is the longitudinal stress produced due to decrease in length. So simply ये सेंटेंस हम लोग लिखे हैं ना, उसका बस मॉडिफिकेशन करना चाहिए इसमें. देखो सिंपली यहाँ पे इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ. सिंपली हम लोग लिखना है ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ. सो इन बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? परपेंडिकुलरली. यस, दैट इज नॉर्मली. ओके, so this is about your longitudinal stress. Next come to volumetric stress. Next stress is our volumetric stress. Second, in case of volumetric stress, what you will observe? You will observe this is suppose the substance, and here force is applied on this body from every direction in a perpendicular manner to the surface. देखो चारों तरफ से, सभी दिशा से फोर्स अप्लाई हो रहा है. देखो कैसे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो इन दिस सिचुएशन ये क्या हो जाएगा? ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. सो इन दिस केस क्या लिखना चाहिए हमको? सिंपली वी कैन राइट, if equal normal forces are applied over every unit surface of a body, then क्या दिखा देगा? Then body undergoes a certain change in volume. Then body undergoes a certain change in volume. कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज हमको दिखाई देगा बस. And in this case, the force opposing this change in volume per unit area is defined as volume stress or volumetric stress. डिफॉर्मिंग फोर्स, तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स बाई एरिया. तो अभी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये क्या है हमारा? एफ अप्लाइड. ये हमारा एफ अप्लाइड. तो उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स डेवलप होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज योर रिस्टोरिंग. यस, सो द फोर्स, ये तुम्हारा सेकेंड लाइन इज द आंसर. द फोर्स अपोजिंग दिस चेंज, इसमें क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम. द फोर्स अपोजिंग दिस चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया is defined as volume stress or is defined as volumetric stress. So here in formula what you can write? So volumetric stress is equals to F perpendicular by area, that is termed as pressure P. That is termed as pressure.
सिंपली डिनोटेड बाई कैपिटल P। यस, सो इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कौन सा मैटर पे दिखाई देगा, ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन प्रीवियसली हम लोग जो पढ़े थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये किस में होगा, सो ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओनली इन केस ऑफ सॉलिड, इसमें हिंट्स देकर हम लोग लिखेंगे ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। यस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऑब्जर्व होगा। लेकिन इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में हो पाएगा। लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस किस में होगा, ओनली इन केस ऑफ सॉलिड। थर्ड वेराइटी क्या है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बाद वी विल डिस्कस थर्ड वेराइटी ऑफ स्ट्रेस, दैट इज योर शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बोल पाएंगे, नहीं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस केस, सी द डायग्राम। Let a body is fixed on this surface. This is the body, suppose. इसके अपर सरफेस के ऊपर एक फोर्स टेंजेंशियल अप्लाई होने से क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा। कैसे दिखाई देगा अभी डायग्राम, लुक एट द फिगर प्रॉपरली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो टेंजेंशियल मैनर पे और पैरेलल मैनर पे उसका टॉप सरफेस पे फोर्स अप्लाई करने से वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा बॉडी। सो कितना एंगल टिल्ट हुआ देखो, थीटा। ये थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड ये कितना लेंथ, लेट इट बी डेल्टा एक्स, एंड ये लेंथ क्या था, वर्टिकल हाइट, लेट इट बी एल। सो शियर स्ट्रेस दिखाई दे तुमको। So in this case you can write when stress is tangential, when stress is tangential or parallel to surface of body, you may mention or parallel to surface of body, then it is known as shear stress. Then it is known as shear stress. So here force is parallel or tangential to the surface. So formula पे हम लोग लिख सकते हैं shear stress is equal to F tangential divided by area. This is the formula. बस. So remember लिक्विड एंड गैस में हमारा टेंसाइल स्ट्रेस ऑब्जर्व नहीं होगा एंड शियर स्ट्रेस भी ऑब्जर्व नहीं होगा, लेकिन बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ऑब्जर्व हो पाएगा। सो ये मेंशन कर दो, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये दोनों में हमारा जो फर्स्ट वेराइटी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये ऑब्जर्व नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ऑब्जर्व नहीं होगा। सेकेंड वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस, ये ऑब्जर्व होगा। थर्ड वन इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस भी ऑब्जर्व नहीं होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, नेक्स्ट कम टू स्ट्रेन। नेक्स्ट टर्म इज आवर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है देखो, नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन। So strain is defined as the ratio of change in dimension of body due to the original dimension of body. So simply we can mention strain, it is equal to change in dimension of body. Dimension means length, area, okay, volume, ये सब हो सकता है। So change in dimension of body by original dimension of body, original dimension of body.
yes. So this is the formula. And remember, चेंज इन सपोज हम लोग लिखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ बॉडी बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी. सो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. सो मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया ना. सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सो इट इज unitless as well as dimensionless. So it has no unit. So you can write it is a unitless and dimensionless quantity. It is a unitless and dimensionless quantity. क्या है? strain. So next we will discuss types. So types of strain में देखो ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है तुमको, सेम एज द स्ट्रेस का भी लिस्ट ऐसे ही था. सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ऐसे भी इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन. एंड लॉन्गिट्यूडिनल का दो वेराइटी, टेंसाइल स्ट्रेन, अनदर वन इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन. यस, ओके. सो कैसे समझेंगे इसको देखो. सो लेट्स डिस्कस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसमें क्या होगा, आइदर लेंथ इंक्रीज होगा फोर्स अप्लाई होने के बाद, नहीं तो लेंथ डिक्रीज होगा. तो एक केस को हम लोग स्टडी करने से चलेगा. सो पहला चीज़ क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. सो लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम. ये डायग्राम को देखो. ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर पे फोर्स अप्लाई होने से क्या होगा? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेंथ में इंक्रीज हो गया. देखो लेंथ इंक्रीज हो गया. दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ. इतना सारा लेंथ इंक्रीज हो गया. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का आंसर क्या होगा? चेंज इन लेंथ. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एज पर द फिगर, चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ एल. सो इसमें लेंथ इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस लिखोगे बस. दिस इज अबाउट योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. नेक्स्ट इज अवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें क्या होगा देखो पिक्चर. सो प्रीवियस जो पिक्चर हम लोग डिस्कशन किए थे ना, उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को. देखो एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसमें चारों तरफ से क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स ईच एंड एवरी डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर. सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. देखो चेंज इन वॉल्यूम हुआ. सो आंसर होगा इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम. दैट मीन्स वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज को सिग्निफाई करने के लिए सिंपली माइनस साइन यूज करेंगे हम लोग. माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी. नेक्स्ट वन इज शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन को देखो. सो पिक्चर, तो ये हमारा पिक्चर देखो. सो बॉडी के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है एज पर द कॉन्टेक्स्ट. शियर स्ट्रेन में क्या होगा? तो देखो बॉडी के टॉप सरफेस के ऊपर लोअर सरफेस क्या है? फिक्स्ड. ये सरफेस फिक्स्ड है अभी. अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ टी. एफ टी डिनोट कर रहा हूँ. उसके बाद एंगल कितना हुआ देखो, फाइव एंगल टिल्ट हुआ. फाइव लिखो नहीं तो थीटा. प्रीवियस पिक्चर में हम लोग थीटा लिए थे, इसको थीटा ले जाओ. थीटा एंगल टिल्ट हुआ. बस ये हमारा डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ. सो इसमें शियर स्ट्रेन क्या होगा? इसका आंसर क्या है देखो. शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एल. तो ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये है हमारा डेल्टा एक्स, हमारा एल, ये है हमारा थीटा. सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये था. सो डेल्टा एक्स बाई एल को एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस ऐसे मत समझो. एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है. सो डेल्टा एक्स बाई एल क्या होगा? दिस इज इक्वल टू टैन थीटा. इसमें टैन थीटा. सो आज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. सो आज पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, सो आज पर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन we know sin theta nearly equal to theta nearly equal to tan theta.
सो व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये है तुम्हारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. सो इन दिस ट्राइंगल tan थीटा को हम लोग नियरली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं. बस दिस इज अबाउट योर शियर स्ट्रेन. आई होप regarding your strain this topic is clear to all of you. So one is your longitudinal strain, second one is volumetric strain or bulk strain, another one is shear strain, and strain is a unitless and dimensionless quantity. Yes. So एक चीज़ हम लोग डिस्कशन किए थे, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी. दैट मीन्स मैं बोला था इट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. यस. सो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. देखो, तो नोट पॉइंट पे लिखोगे स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी. स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी. यस. लेट अस थिंक दिस इज योर वायर. एक वायर को हम लोग ऐसे कट करते हैं. ऐसे कट करने के बाद क्या होगा, देखो ये तुमको मिलेगा एक एरिया. सो एक्चुअली इसका एरिया प्रोसेसन क्या है, देखो ये वाला चीज़, दिस एरिया इज ए. सो अभी मैं जो वाइट कलर पे शेडिंग कर रहा हूँ, इसका एरिया क्या होगा, ए होगा क्या? ये एरिया ए नहीं होगा. लेट दिस एरिया इज ए डैश. यस. एंड इन दिस पिक्चर लेट दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, एफ फोर्स इज एक्टिंग. सो मैं पूछूंगा इसमें, ये है तुम्हारा ओ आर. सो इफ आई विल आस्क फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसका आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या होगा, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एरिया. सो ये एंगल सपोज थीटा गिवन है तुमको. सो ये फोर्स का दो कंपोनेंट हमको मिलेगा. दिस इज वन कंपोनेंट, दिस विल बी अनदर कंपोनेंट. सो देखो यहाँ पे तुमको जेड फॉर्मेट दिखाई दिया. यस. दैट मीन्स ये एंगल भी क्या होगा, थीटा. सो दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा. सो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को, सो आंसर क्या होगा, फोर्स बाई एरिया. सो दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स को लेना चाहिए, एफ साइन थीटा बाई एरिया ए डैश. बस. सो यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया. हियर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया. नेक्स्ट लेट्स फाइंड शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेस. सो शियर वर्ड यूज होगा तो वी हैव टू थिंक अबाउट टेंजेंशियल फोर्स और पैरेलल फोर्स. सो एरिया ए डैश को टेंजेंशियल और पैरेलल कौन है, एफ कॉस थीटा. सो द आंसर विल बी एफ कॉस थीटा बाई ए डैश. सो हियर फोर्स इज along the surface, फोर्स इज along the surface. सो देखो डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट वैल्यू आ गया. यस. सो दोनों स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस है नहीं, लेकिन दोनों का वैल्यू डिफरेंट. यस. दैट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन. लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ radii of two wires of same material. That is 2:1. Find if they are stressed by same force, the ratio of stress. तो स्ट्रेस का आंसर क्या होगा, टू वायर्स, एक को ले जाओ फर्स्ट वायर, दूसरे को सेकेंड वायर. सो पूछ रहा है तुमको रेशियो ऑफ स्ट्रेस. सो स्ट्रेस 1 और स्ट्रेस ऑफ फर्स्ट वायर डिवाइड बाई स्ट्रेस ऑफ सेकेंड वायर. दैट मीन स्ट्रेस का आंसर क्या होगा, फोर्स बाई एरिया. सो इसमें लिख रहा हूँ F1 बाई A1 होल डिवाइड बाई F2 बाई A2. यस. लेकिन क्वेश्चन गिवन क्या है, देखो सेम फोर्स. दैट मीन्स F1 एंड F2 का वैल्यू क्या होगा, F. सो F बाई ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर होल डिवाइड बाई F डिवाइड बाई पाई R2 स्क्वायर. अभी कैंसिल कौन हो गया, F कैंसिल, पाई पाई भी कैंसिल हो गया. कितना बचा रहे देखो, नेक्स्ट वन इज R2 बाई R1 दैट इज होल स्क्वायर, R2 बाई R1 होल स्क्वायर. सो इसमें गिवन क्या है, R1 बाई R2 2:1. दैट मीन्स 2:1 का आंसर क्या है, R1 बाई R2 गिवन है 2:1. सो R2 बाई R1 क्या होगा, 1:2 और 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4. दिस इज द आंसर.
आई होप इट इज क्लियर. यस. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है तुम्हारा, सपोज स्ट्रेन का एक क्वेश्चन हम लोग करना चाहिए. स्ट्रेन क्वेश्चन, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताया तुमको, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे कुछ. सो क्वेश्चन क्या दिया है, ये तुम्हारा क्वेश्चन, ए स्टील वायर of 2 meter long is suspended from ceiling. Then it is mentioned when a mass is hung at its lower end, increase in length recorded is 1 centimeter. Increase in length recorded is 1 centimeter. So determine the strain in the wire. Determine the strain in the wire. इसे सॉल्व कर पाओगे तुम लोग. देखो कैसे सॉल्व करना है इसको. पहला चीज़ क्या है, गिवन क्या दिया है, देखो, a steel wire of 2 meter long, that means this is the length of the wire, and the increase in length, that is change in length, increase in length कितना, 1 centimeter. So simply you can say given L is equal to 2 meter and delta L is equal to 1 centimeter. SI में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power minus 2 मीटर. So strain का आंसर क्या होगा, so strain is equal to delta L by L. So delta L is 10 to the power minus 2 divided by 2. So answer will be 0.5 into 10 to the minus 2. No unit, because it is strain. Strain is unitless and dimensionless. So wait up to next class. In next class we will discuss what? That is our modulus of elasticity and the numericals related to that concept. That part is fully important for this chapter. Yes. So thank you. Have a nice day.